Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on the motion of thanks on the President's address. Sir, it was indeed a very proud moment. कल बहुत गर्व लगा था जब महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पे हम सबको संबोधित किए. एक आदिवासी होने के नाते मैं समझता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है. एंड इसी सिलसिले में अपने अभिभाषण 2-3 मुद्दों पे रखना चाहता हूँ. जो सबसे पहला मुद्दा है सर, हम आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है? जल, जंगल, ज़मीन. अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 पारित किया गया सर, ये हम लोग शायद सब सस्पेंड थे, ये बाहर थे, जो बिना डिस्कशन के पारित किया गया है. अभी आप देखोगे तो PEKB, पारसा ईस्ट एंड किटे बैसिन, ये हसडियो हिल्स में जो कोल माइंस है, फेज 2 एक्सटेंशन ऑफ कोल माइंस, इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ? द गवर्नमेंट एंड डेवलपर्स can now acquire land for mining at business purpose without any local stakeholders. The second thing is they have redefined the definition of forest. What was forest called? They have redefined the forest definition. I'll quote some Supreme Court judgments, sir. The first one was 1997 Samata judgment, which said no private party can do mining in scheduled areas. There was the famous Niyamagiri judgment, which say the allotment of lands to be completed first before any public project can be commenced. Then we have the Godavaram judgment, which says that forest means all the forests naturally found out are not limited to notified forest. With this amendment, the Forest and Conservation Act, now they are mentioning only notified forest. So what will happen? The judgments and other landscape, whatever was there, now 50 to 75% of country's forest areas cease to be existing, sir. And this particular amendment is diluting the Forest Right Act and the Gram Sabha, the informed consent, local stakeholder. The Gram Sabha used to decide like what purpose will the forest land will be diverted. That is also getting diluted, and this is a very serious concern which will impact almost 700 million tribals, sir, across the country. And we have seen also how it is happening after the government which formed in Chhattisgarh. They're conducting fake Gram Sabhas, and the government can control with, I'll give you an example, like we have Balda mines, Mali Parvat, or Hasdio mines. First, the government, they give the mining control to the corporate houses, and then they leave it to the state government to take care of the tribal rights, land conflicts, and so on. So, पहले से ही आप जमीन दे दिए तो उसके बाद ये क्या होगा सर? And all these judgments, they're slightly dilating. Claims के बारे में बोलता हूँ. The claims of land by forest dwellers, 80% of the claims have been rejected by the central government. 80%. I'll give you an example. In past as well, there used to be rejection. Before 2014, out of 308 million claims, only 54% were rejected. But abhi, after 2014, if you look at the data, out of 2.7 lakh claims, around 79% have been rejected, sir. So the land which was supposed to be given to the tribals through the Forest Right Act, now this is slowly going away. Nagarnar steel plant, I'll give you an example. Nagarnar steel plant was conceived way back in 2015 by the government, and we gave them the mines in Baledala for the purpose that Bastar tribals, Bastar ke Adivasi log, us Nagarnar steel plant mein, they can be there and PSUs would be there, they will get jobs guarantee and all. Now, it was commissioned just before the elections. NMDC has 61% stake, but no one knows when the disinvestment will happen, and this will be privatized. So Nagarnar steel plant का जो idea था, बस्तर के आदिवासी वहाँ नौकरी करेंगे, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. सर, तो आदिवासियों का जो भी मेन समस्या है, जल, जंगल, जमीन, ये सरकार एक-एक कानून ऐसे लेके आ रही है जिससे कि हमारी अधिकार डाइल्यूट होते जा रहा है, जो मैं आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि इसको रोकने की कड़ी आवश्यकता है. In scheduled areas, sir, there are a lot of SC communities. Scheduled caste people are there. I'll talk about my area, Raigada and Koraput district. Dombo community है जो वहाँ पे 20% Dombo community लोग रहते हैं. And ये Dombo जो रहते हैं, जो Dombo community के लोग हैं, ये पहाड़ में भी रहते हैं. जैसे उनको डोंगरिया डोम कहते हैं. डोंगरिया कौन जैसे PVTG से, similarly डोंगरिया डोम, they stay in the mountains, but they belong to scheduled caste community. Sir, इनका main demand है, it's not because they're scheduled caste, but because they live in scheduled areas, in mountains, which are no access basically to mainstream life. This Dombo community,
They have to be recognized as vulnerable community, recognize the language, recognize the folklore, recognize the folk dance. Promotion of art, culture, custom, and tradition of Dombo community is something which is the need of the day. We need a special development council similar to scheduled tribes for the Dombo community also, scheduled caste people. We need to have model residential schools in the line with Eclavia Model School. We need 200 bedded hostel facilities, employment opportunity. When we have industries in mining areas, 90% of the employment opportunities should be reserved to local people, SC, ST, OBC people. The homestead land, the scheduled caste people, they're not getting the homestead land. प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए उनको लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, तो होमस्टे लैंड का भी सुविधा प्रोवाइड करना चाहिए. फॉरेस्ट राइट एक्ट में जैसे आदिवासियों के साथ लैंड का हम लोग कर रहे हैं, एक नन आदिवासी को 30 साल का रेजिडेंस प्रूफ दिखाना पड़ता है, बट ये एससी लोग हैं, जो डोम लोग हैं, विभिन्न एससी लोग हैं, इनको 3 साल के बदले में इनको छूट दिया जाए सर, ताकि वो अगर जंगल में रहते हैं तो उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए. रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज, अभी भी वहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज में एससी लोग को रिजर्वेशन नहीं प्राप्त होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर फॉर ट्राइबल्स, आई एज अ ट्राइबल आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. मुझे लोन नहीं मिलता है, ना बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए लोन मिलता है, ना पढ़ाई के लिए लोन मिलता है, ना घर बनाने के लिए लोन मिलता है. मेरी जगह है, आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस की ट्राइबल शुड नॉट बी लैंडलेस, बट if I don't get access to finance, if I don't get access to loan system, how will I develop myself? 75 years, 76 years, I can't mortgage my land. The government doesn't want to take my land, and I don't have access to finance system. This was fine till some point of time, sir. But abhi kya ho raha hai? Usi same jagah ko we are getting, the government is encroaching our land. They're doing acquisition for Bharatmala projects, or they're doing acquisition for mining projects, they're doing acquisition for large projects. So this leaves us nowhere. हमारी जो जमीन है उसमें मेरे पास, there should be some policies, so there should be some discussion at least how we can solve the issue. The state government of Odisha, they came up with a policy that tribals can sell to non-tribals. We condemn it, sir. We reject it. This is not the solution. The solution should be the Tribal Advisory Council. They should sit and see what can be done. The government should interfere, that they can give guarantee to the banks that the land can be mortgaged. But if you just open the whole thing, tribal selling land to non-tribals, this will create chaos. All the tribals will remain landless, sir. We need to have a national policy on scheduled tribes to give a framework for tribals for the overall development. There has been an increased attack on Christian tribals, sir, throughout the country. If you look at Chhattisgarh, Bastar region, if you look at Gonpur, Gudari, if you look at Chandrapur, the Christian tribals have been attacked. I again say, tribal और आदिवासी जो हम लोग होते हैं, ये धर्म के पारी होते हैं. क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, दूसरे जाति के हम लोग ट्राइबल्स होते हैं. किसी भी माइनॉरिटी को सुरक्षा पहुंचाने का काम सरकार का होता है, एंड ये क्रिश्चियन ट्राइबल्स को भी हिफाजत रखने का काम माननीय प्रधानमंत्री का होना चाहिए. जीएसटी, केंदुपत्ता माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो हम लोग के आदिवासी लोग वन में जाते हैं, वो केंदुपत्ता संग्रहण करते हैं एंड उस पर हम लोग बेचते हैं. दैट इज अवर लाइवलीहुड. दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज सो इनसेंसिटिव दैट 5% जीएसटी था, उसको 18% कर दिए. सर, हमारा डिमांड आपके थ्रू से है कि इस जो जीएसटी है इसको हटाना चाहिए इमीडिएटली. आई विल कम बैक टू सम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी बिफोर आई रैप इट अप. सर, गोनपुर तिरवरी रेल लाइन प्रोजेक्ट, this has been announced by the government in 2017-18, and it has been a long-term demand. It's primarily a tribal-dominated district. After the ROR was coming as minus 3%, the revised ROR is now positive. This particular project, they had some discussion with state government. The state government will share the cost and give land free of cost. That is happening, sir. But irrespective of that, the central government has to invest in this particular project, which is the lifeline of Raigada. This is pending for a long time. The Raigada Rail Division and Gunpur Teriveri line, this has to be done immediately. Sir, the state government of Odisha, they have written to the central government that 180 communities should be given tribal status. Sir, we don't agree with this. If you make everyone tribal, where will the tribals go? There are some genuine communities which has to be taken care of, their anthropological details, their primitive traits, the socio-economic condition. Jhodia, Durua, and Dora, such tribes who really deserves to be in tribal community. But if the state government keeps sending 180, 200 tribes to be made scheduled tribe, then the central government won't do anything. This is something which needs discussion. The central government and state government, इनको आपस में बैठना चाहिए और देखना चाहिए कौन actually tribal है. आप सबको tribal नहीं कर सकते हो. एक बिल आया था last session में,
जिसमें हिमाचल प्रदेश का बिल था, आपने ये बताया कि कुछ लोग जो एसटी कम्युनिटी के एसटी बना दो एंड बाकी लोग जो बच गए जो नहीं एसटी नहीं बनना चाहते उसको एससी कैटेगरी दो। एसटी एंड एससी आर वेरी डिफरेंट। एसटी इज प्रिमिटिव ट्रेड्स, सेक्लिजेंस, उसका इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये 4 पॉइंट्स है जो एसटी है। 180 ट्राइब्स को आप आदिवासी नहीं बना सकते हो सर। 3-4 जो महीने इसको आप बनाओ, बाकी भी आप देखो कि इनका क्या एंथ्रोपोलॉजिकल डिटेल्स है, ये एक्चुअली ट्राइबल्स है कि नहीं, उनके संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, परंपरा है, उसके बाद ये करना पड़ेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का इसका एक बहुत बड़ा समस्या है। ये आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं इनका सैलरी बहुत कम है सर। हमारी राज्य सरकार ने उनको वादा दे दे के ठक रही है खाली, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो लोग बहुत परेशान हैं एंड बहुत मुसीबत में है सर। वी डिमांड थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनको सैलरी कम से कम 20-25 हज़ार करना चाहिए। जो हेल्पर्स है उनको कम से कम 15,000 करना चाहिए। इसके साथ साथ इनको कैसे पेंशन की सुविधा मिले जाए, उनको लिए ये करना पड़ेगा सर। कोरापुट, जयपुर एंड रायगढ़ बाईपास, दिस इज पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वी टुक लॉट ऑफ ट्रबल इन गेटिंग दिस अप्रूव्ड, बट अभी लैंड एक्विजिशन में फंस गया है। इसको अब हमारी ये अनुरोध होगा कि इसको जितना जल्दी हो सके सर। लास्टली पेंशन, आज के डेट में जो पेंशन दिया जा रहा है वो 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता है एंड जो बुजुर्ग महिला है उसको 700 रुपये दिया जाता है सर। आज के डेट में ये बहुत कम है। हम डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार टेक ए कॉग्निजेंस सिचुएशन, इन लोगों का पेंशन आप बढ़ा के कम से कम 3,000 रुपया कीजिए एंड जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका 3,500 कीजिए। एंड वी शुड थिंक about a system where the financial parity should be minimized. Universal basic income is a concept which has to be thought upon. इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि सबको एक बेसिक इनकम होना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सब के साथ मैं अपना इस मोशन ऑफ थैंक्स में ऑनरेबल प्रेसिडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करके अपना भाषण यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।